on changes brought in urban horticulture. Hello. Hello. Hello, sir. Yes. Yeah. Sachin sir has left the meeting somehow. No worries. Hello, everybody. We're so sorry for the delay. I welcome you all. Today we have a guest speaker with us, Mr. Chellaiah, and we will be talking about urban horticulture and landscape and the changes that have come about in it since the session has begun. Sachin sir, are you there with us? Okay. So a very good evening to all of you. I am Prachi Kohli, and I would like to begin our today's webinar by giving a very brief introduction to you about what INA is and what INA does. So here's a brief introduction with a small PPT. I'm going to start. So the Indian nurseryman began its green journey in the year 1987. And for the last 33 years, we have been working as a tight-knit community. Our vision is to unite the horticulture community and work towards a goal of making a positive economic, cultural, and social impact. Our founder and first president, late Shri Arjun Das Agarwalji, was the one who sowed the seeds of INA as we see it today. At INA, we are forever indebted to this visionary man for his untiring efforts. This is our leadership board who have taken Shri Arjun Das Ji's agenda to new heights. Our current president, Mr. YP Singh Ji, who is also the 9th INA president, took charge in 2019, and under his dynamic leadership, within a short period of span, we proudly announced that INA is now growing not only nationally, but also globally. The current leadership board is evident of the fact that INA leaders hail from all over the country representing unity and diversity of India. Furthermore, we have our iconic green ambassadors from various industries supporting INA in its endeavors. INA is today the largest NGO as a member of the National Horticulture Board with an extended network of more than 2 lakh farmers and cultivators. Therefore, INA represents plant breeders, greenhouse gases, distributors, retailers, educators, florists, researchers, landscapers, and all other stakeholders across the spectrum of the horticulture industry. INA works in a diverse range of thematic areas from PR and advocacy to publications and partnerships, from networking and events to exhibitions, fundraising, capacity building, and even study tours. INA worked extensively during the COVID-19 pandemic with the government ministries through video conferencing and put forward the problems faced by the nursery sector during the lockdown. INA was successful in categorizing plants and plant products under the essentials items category and providing immediate relief to nurserymen across India. A great news for all our members and subscribers and participants today is that INA is now global. I am proud to inform you all that INA family has now expanded to Japan, Vietnam, Lebanon, South Africa, Netherlands, Italy, Colombia, amongst others. Our star feature at INA is our Nursery Today magazine, which covers all news and updates related to the nursery and allied sectors and features industry experts and influencers who write pieces for this magazine. You can now download a soft copy of our monthly magazine from the INA website. Apart from this monthly edition, INA also publishes a directory for horticulture industry every 3 years, and its 3rd edition is due this year in 2021. INA boasts
India's largest international exhibition on ornamental plants, nurseries, landscape, floriculture, greenhouse gases, arboriculture, and allied industries called the Hortipro India. INA is an association with the Delhi Tourism and Transportation Development Corporation Limited, organized the 33rd Garden Tourism Festival held in March 2021 at the Garden of Five Senses, New Delhi. The theme for this year was Green Balcony. INA was an associate partner and award sponsor at this event. Last but not the least, INA also started an initiative called Project Sampradhan, encouraging its wide network of members to contribute towards the PM Care funds in view of the global pandemic. We have broken records in this department where we have collected more than 51 lakh rupees and donated towards the PM Care funds. With these amazing success stories, I thank you all for your patience. You can now contact us on the given phone numbers and email for your any query and discussion, or visit our website for more details. I hope you have a wonderful time today at our webinar. Over to you, Sachin, sir. Thank you, Prachi Madam. Today we have a topic of changes brought in urban horticulture and landscaping. And today we have with us a very great personality, Chellaiah sir, Director, Horticulture, New Delhi Municipal Council, Delhi. A man who has vision and passion about the field of horticulture and landscaping. Amazing personality I saw ever. He is a member of Tree Transplantation Policy, member Delhi Tree Authority, member Rose Society of India. He's a member of Bougainvillea Society of India. He's a life member of Horticulture Society of India. Sir has did his MSc in horticulture. He worked 2.5 years in the Republic of Maldives as a senior horticulturist in the resort, wherein he got much exposure and challenges for developing and maintaining landscape. He has wide experience of 17 years in the government services, where he directly involved in the horticulture, landscaping, tree plantations, soil management, green waste management. Since 2004, he is working in New Delhi Municipal Council. During his tenure of 17 years, brought a lot of changes to the administration, monitoring, and transparency. Under his dynamic leadership, they have started School of Gardening and been operated to improve training cycle and upgrade their skills in gardening. Under his leadership, Honorable Chief Minister of Telangana invited NDMC Horticulture team under the leadership of Mr. Chellaiah sir to guide team on Hyderabad and other corporation to penetrate the culture of NDMC. Chellaiah sir is dedicated on the arrangement and decoration of the Red Fort and gates of Rashtrapati Bhavan, as well as displaying majestic flower show to give grand welcome to the President of USA. So today we have with us an amazing personality who has a passion, new creation, and in the field of landscaping and horticulture. So I warmly welcome Dr. Chellaiah sir on behalf of Indian Nurserymen Association, and I request him to deliver today's talk on the changes brought in urban horticulture and landscaping. So warm welcome to you, sir, and over to you, sir. Thank you so much. Thank you so much, and namaskar to every audience and the horticulture fraternity. And my Gati, congratulations and thank you to the Indian Nurserymen Association. They're continuously doing the good job in promoting the plants as well as the plants trade and landscaping and the human, the life. Whatever the INA today they're doing, it's immense value. So in this platform, today I am participating means I have a privilege and very happy to meet you all the people like eminent people like participate in this group. So thank you, Mr. Sachin ji, and thank you, Mr. our Dr. Y.P. Singh sir and Mr. Tyagi sir. So really today the topic is already already is mentioned by the Sachin sir and Prachi ma'am ji. So changes brought in the urban horticulture.
So whatever I did in the New Delhi Municipal Council since last 17 years, I would like to present in front of you so that maybe some of you may get some ignited, some of may inspire. So the idea behind this presentation, this Zoom meeting is to ignite the people like you interested so that the work done, whatever the done work, that can be carried forward or even that may be changed according to your location, according to your idea, because customize. So because wherever we go, if we see something, अरे अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, इसके में हम कैसे करेंगे, इसी प्रकार एक मन के अंदर ये हो जाता है. So Sachin ji, I hopefully it's I think the participants all are from across the country. I think it's a good. And so most of them, they can understand the Hindi as well as English in the bilingual, Yes, sir. Yes, sir. You are properly audible. You can mix both the language, Hindi and English. Okay, okay. So yes, sir. Yes, sir. Audience के एक हमारा तरफ से एक निवेदन है, मेरा हिंदी है, थोड़ा सा ऐसे लगता है, थोड़ा सा आपको हंसने भी चांस हो सकता है कोई शब्द में. सो कृपया आप थोड़ा सा जो भी है कुछ आप अगर गलत हो गया थोड़ा माफी करिए, जस्ट लाइक बच्चे हिंदी बात कर रहे इसी प्रकार. जी अभी है. So I am in New Delhi Municipal Council since last 17 years. यहाँ पर काम कर रहे हैं. So इसी में जो completely मेरा NDMC area के बारे में अगर Sir, you are not audible, sir. I am hearing, but my voice is not audible. Hello. Sir, it is audible. Is audible? No? Yes, sir. Please go ahead, yes, sir. Now you are audible, sir. Please go ahead. Yeah. Somewhere voice is cracking. Okay. So NDMC area is completely look after. 1 minute. Hello. Yes. Yes, sir. Hello. Works. Now audible? Works. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Works. Hello. Hello. Yes, sir. You're audible. Hello. Hello, sir. Yes, you're audible. Hello. Hello. Hello, sir. You're audible. Audible. Yes, sir. Hearing the voice. That's good. Pardon, 1 minute. Just a bit. Hello. Yes, sir. Sir, please go ahead, sir. Yes. So, if I want to say about the NDMC, it's about 42.7 square kilometer. It's look after only VVIP area. यहाँ पर प्रधानमंत्री की माननीय हमारा प्रधानमंत्री की घर है, हमारा राष्ट्रपति जी की जो पैलेस है और अन्य जो VVIP और कैबिनेट मंत्री का और ब्यूरोक्रेट्स का सबको यहाँ पर है, बंगला है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और इंडिया गेट है. तो सभी एरिया हमें यहाँ पर लुक आफ्टर करते आ रहे हैं. ये एरिया तो हमारा ग्रीन एरिया अगर बात करते हैं 1500 एकड़ है NDMC एरिया में. तो उसी 1500 एकड़ मेंटेन करने के लिए हमारे पास 1500 लेबर है, मतलब गार्डनर है, माली है, माली पद में काम कर रहे हैं. आज का जो इम्पोर्टेंस जो है, मैं आज तक क्या ट्रांसफॉर्मेशन हमें लेकर आया है, तो टूलिप में लेकर आया है और ट्री ट्रांसप्लांटेशन में लेकर आया है और हमें जो फ्लावर बेड में स्टाइल का है उसके हम ब्रॉड है ना एक बहुत बड़ा चेंजेस लेकर आया था. और अर्बन लैंडस्केपिंग में शेड लविंग प्लांट्स में शेड एरिया में हम बहुत कुछ काम किया है. तो उसके अलावा भी जो स्कूल ऑफ गार्डनिंग है और मैकेनाइजेशन वगैरह हम किया है, इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ. फर्स्ट अभी आप देखिएगा आपके सामने है टूलिप है. टूलिप के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ बिकॉज टूलिप है सिर्फ दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में जो होता था वहां पर 3-4 बेड है, टूलिप का बेड होता था इनिशियली.
तो 2014 में हमारा चेयरमैन ऑनरेबल चेयरमैन साहब आए थे, नए चेयरमैन साहब, उन्होंने राष्ट्रपति महोदय से मिला था, एक प्लांटेशन प्रोग्राम पे। उन्होंने उसी समय पूछा था राष्ट्रपति ने, आप लोग टूलिप पे बाहर क्यों नहीं कर पाते? तो एक्चुअली दिल्ली में ये प्रॉब्लम था, एक्चुअली टेम्परेचर ना एराटिक हो जाता है। कश्मीरी की तरफ यहाँ पर टेम्परेचर या चिल्लिंग कोल्ड टेम्परेचर या चिल्लिंग टेम्परेचर ये वगैरह यहाँ पर दिल्ली में नहीं है कंसिस्टेंटली एराटिक। एक दिन 5 डिग्री रात में हो जाता है, फिर अगले दिन 8 डिग्री हो जाता है, फिर ऐसे चेंजेस 10 डिग्री इसी प्रकार चेंजेस होता रहे। लेकिन टूलिप के लिए एक चैलेंज ये है था, इंट्रोडक्शन में हमारा मन में ये था टूलिप यहाँ परफॉर्म नहीं करेगा। हर ऑफिसर भी यही था मन में, अरे टूलिप इज अ बिग चैलेंज है। क्यों चैलेंज है? टूलिप का बल्ब का जो डॉर्मेंसी ब्रेक करना, तो आप जस्ट 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नाइट में 15 दिन तक कंसिस्टेंटली होना चाहिए था। वो टेम्परेचर हमें दिल्ली में उम्मीद नहीं कर सकते था, कारण था एराटिक है। सो क्लाइमेट चेंज भी एक फैक्टर था। तो उसके बाद हमें किसी के सक्सेसफुली लेकर आने के लिए फिर हम सोचा था या बल्बस है, अगर मैं कश्मीर से लेकर आऊँ या कलिंगपोंग से लेकर आऊँ, कहाँ से लेकर आने पे अच्छा है? बिकॉज हमारा जो टूलिप से जो पहले देखा है कश्मीर का एंड और कलिंगपोंग का है लोकली जो अवेलेबल बल्बस से, उसमें इतना परफॉर्मेंस नहीं था, इतना जो ब्लूमिंग जो क्वालिटी नहीं था। जो देखो आप इसी फोटो में आपको जो द टाइटनेस ऑफ द पेटल्स है ना, हाउ इट्स ये इरेक्शन है एंड टाइटनेस है, लॉन्ग स्पैन है, ये नहीं था। सो इसलिए हमें क्या किया, जो अगर हॉलैंड से अगर इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ दिल्ली में आके कैसे स्प्राउट करेगा, डॉर्मेंट से कैसे ब्रेक होगा, उसी टेम्परेचर हम दे नहीं सकता, क्या करें? तो उसके बाद हमें एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के हम फायदा उठाया था। क्या है? जो हमें ऑर्डर देने के पहले वहीं पर प्री ट्रीटेड एंड प्री प्रोग्राम। प्री ट्रीटेड मतलब है वहां डॉर्मेंसी की ब्रेक करके फिर उसके जर्मिनेशन के लिए प्रोग्राम करके देते हैं। तो उसी तरह के जो हॉलैंड जो एडवांस है, सो वहां पर तो ऐसे हंड्रेड्स ऑफ एकर्स, एक ही अगर टूलिप होता तो टूलिप की हंड्रेड्स ऑफ एकड़ होती थी, वहां पर बल्क प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से करके फिर हमें दिया था डिफरेंट कलर का। तो हमें उसी समय फर्स्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया था स्मॉल क्वांटिटी में 10,000 बल्ब्स का इंट्रोड्यूस किया था। उसी में हमको अच्छा रिजल्ट आया था, बहुत प्लूम क्वालिटी अच्छी आई। हमें उस समय क्या किया था, इनिशियल में एक हम प्लांटर में पॉट्स में स्मॉल पॉट्स में लगा के देखा था। वो मीडिया भी ऐसे मीडिया स्टेराइल मीडिया हमें यूज किया था, उसमें फॉर्माल्डिहाइड और ट्रीटमेंट वगैरह हमें करवा कर फ्यूमिकेशन वगैरह करवा कर उसके बाद हमें बहुत केयर करके हमें किया था। सो वंस दैट उसी साल में हमको अच्छा ब्लूम आया था। जो बल्बस लगाने के बाद जस्ट बल्बस जब आपको जो बल्ब है कम से कम 3 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए, बस इतना, ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। 3 सेंटीमीटर है, 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए था। उसके बाद उस साल बहुत अच्छा 25 डेज में हमको ब्लूम आ गया। तो 25 डेज में ब्लूम आ गया था, तो हमको बहुत आश्चर्य लगता था, बिकॉज हमें जो प्लांटेशन क्या था, जो दिसंबर 25 के बाद, बिकॉज दिल्ली क्लाइमेट में 25 दिसंबर क्रिसमस से जो दिसंबर 15 से लेकर हमें जनवरी 5 तारीख के बीच में हम प्लांटेशन किया था। सो लेकिन परफॉर्मेंस उस साल में बहुत अच्छा आया था। उसके बाद अभी कंटिन्यूसली वो टूलिप दिल्ली में पब्लिक प्लेस में राउंड अबाउट है। आप कहीं भी दिल्ली विजिट करते हो, एयरपोर्ट से आते हो, सांदीपत में आप देख सकते थे पूरा गोल चक्कर होता है पूरा। पहले हमें ऐसे स्लोली ग्रेजुअली पहले क्या क्या पार्ट में, फिर उसके बाद क्या क्या 1-2 राउंड अबाउट में सर्कल में हम पब्लिक जो नजर कहाँ है वहीं पर क्या था, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, पब्लिक की बहुत खुशी हुआ था। उसके बाद क्या क्या अगले साल सांदीपत में कंप्लीटली जो ओपन विस्टा था, उसी सांदीपति में कंप्लीट 1.5 किलोमीटर का जो है उसी पोर्शन में हमें ऐसे लाइनिंग करा दिया था कलर वाइज। तो इट वाज वेरी
very, everybody appreciated. Media people बहुत appreciate किया, लोग इतना तारीफ किया, हर मीडिया में इतना तारीफ किया, सोशल मीडिया में इतना तारीफ किया. और ड्यूरिंग द ट्रम्प हॉनरेबल है ना जो यूएस प्रेसिडेंट जो आया था उस समय पूरा जगह उनका एम्बेसी की यूएस एम्बेसी के सामने एंड राष्ट्रपति भवन के एंड उसके पीछे 11 मूर्ति और हमारा अन्य जो गार्डन है चिल्ड्रंस पार्क इंडिया गेट है लोधी गार्डन नेहरू पार्क है ये जगह में टूलिप का एक ब्लूम मैसेज पब्लिक में बहुत वाइडर रेंज में रीच हुआ था. देखिए आप चिल्ड्रन पार्क है चिल्ड्रन पार्क इंडिया गेट में कितना अच्छा है ये आपको सामने है. देखो येलो कलर है पिंक कलर है रेड कलर है इसी प्रकार व्हाइट कलर भी है मिक्सड कलर. बट हमें क्या टूलिप का अगर मजा लेना तो देखिए इसी प्रकार जो सिंगल मोनोक्रोमेटिक व्हाइट कलर देन उसके साथ कॉन्ट्रास्ट कलर येलो कलर या रेड कलर इसी तरह का लाइनिंग इफेक्ट अगर लंबी दूर लगा कर अगर कर दिया डिजाइनिंग में तो देखने के दूर से देखने के ऐसे सीनिक ब्यूटी की तरह के लुक आ जाता उसी इसकी वजह से जो लोग आज भी टूलिप का एनडीएमसी का जो हमारा रोल है बहुत याद करते हैं. तो ये लग रहा है टूलिप का जो एक चैलेंज था दिल्ली में नहीं आ सकता था ऐसे एक फीलिंग में था लेकिन उसके भी हमारा टीम ने बहुत जो प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो उसी ने क्या क्या बोला जो हॉलैंड वाला हमें उसी प्रकार बिल्कुल फॉलो किया उसके अकॉर्डिंग हमको अच्छा रिजल्ट भी आ गया. इवन जो हॉर्टिकल्चर एक्सपो हुआ था पुणे में मैं आया था वहां पर जो एक स्टॉल कंप्लीटली जो हॉलैंड वाला बल्बस वाला का था जब उन लोग इसी तरह का हमारा परफॉर्मेंस देखे फोटो वीडियोस देखे उन लोग बहुत खुशी हो गए बिकॉज उनका ये उम्मीद नहीं है हमें इंडिया में इसी तरह का ब्लूम देख सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं. So the introduction of the tulip is one of the major achievement for us and even that we come across is the very limitations and it is because the bulb sprout in Delhi it is not an easy task because the peculiar character of the tulip is the dormancy. The bulb dormancy is the one of the major issue in this. That's why we thought that because getting 5 degrees Celsius for 15 days continuously is for breaking the dormancy. It is a very tough job. So that's why we have got this bulbous from Holland already pre-treated and pre-programmed. So because of that only we got success. And you see here the Asiatic lily and lilium and hyacinth and freesia and muscary and पिछले साल honeymoon भी हमें ये किया था. So now it's performing good and people those like to grow this kind of the tulip in India. At least you can try in your location where the temperature is at least mild during the winter. So hopefully or otherwise you can exploit this market for importing because right now what I have the agency number of agency in India is very few and because they need the infrastructure for importing also and as well as the difficulty of the importing is you must have the post quarantine checking जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो अगर इंपोर्ट करना चाहते तो उसके पहले प्लेसमेंट करने ऑर्डर प्लेस करो उसके बाद आपको क्वारंटाइन के लिए डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा फिर क्वारंटाइन वाला आएगा फिर वो साइंटिस्ट फिर आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सपोज कोई डिजीज से टेस्ट अगर आ गया तो उसके कैसे कंट्रोल करने के लिए आपके पास कैपेसिटी है इसी प्रकार चेक करेंगे. सो बिकॉज फॉर्चुनेटली वी हैव 3 हाईटेक नर्सरी so well equipped and so after the verification of that infrastructure the plant quarantine has given the green signal. So thereafter only that certificate we have given to the agency and they will send to the Holland. Then from there the bulbs are imported. These are the procedure. But because we have the infrastructure in NDMC, New Delhi, we got it. But many of the peoples in Delhi, the private people, the residents, those who are very keen and they are like to purchase. But
the availability of the private agencies are in this sector is very less. So because that needs a specific certification also in the Delhi government or whatever the state mandatory, like seed certification and for trading they must get the certification. The same thing in this bulbous also. So next we can. Rachiji, next slides. Yeah, okay, move on. Just to see here, previous one, please. Previous, please. See here, just in front of Vice President Bangla. In front of our Vice President Bangla, we have the roundabout. That's a goal checker. गोल चक्कर कहते हैं ना, जो राउंड अब रोड के बीच में आती है, उसी में देखिएगा साइड में सेगमेंट्स में हमें जो ब्लू कलर का आइरिस बल्ब लगाया, देखो कितना बढ़िया लग रहा था। फिर और हायासिंथ लगाया, देखिए कितना अच्छा लग रही है। और रेड कलर के देख लो हायासिंथ कितना बढ़िया लग रही है। जो भी है इसी बल्बस में प्लांट्स में जो कमर्शियल अगर लैंडस्केप पर अगर इसी में अगर पार्टिसिपेंट हो, you have to think about the mass planting, because एक दो अगर 3 4 10 प्लांट्स अगर पौधे लगा कर अगर देखना चाहते तो उसमें मजा नहीं आएगा। You cannot get the enjoyment by planting very meager and 2 or 3 or 10 or 100 plants. If you plan it, you just go for a more scale and a very long stretch in a color wise, single color wise adjustment to different color. You can make a rainbow view also. So, but you first check it. Anybody want that? First initially get the minimum quantity and first get the trial in your area. If it is success, then you can go for mass. That's my advice. Next please. Rachit, next, yes. Now, I wanted to show you some of the slides. ये NDMC area में आप हमारे पास है कम से कम 65% ग्रीन एरिया है, ट्री कैनपी है, 135 रोड है, 300 किलोमीटर है स्ट्रेच बोथ साइड अगर करते देखते तो। सो ब्रिटिश अंग्रेज ने इतना बढ़िया वहीं पर ऐसे पौधे लगाया, एक एक रोड में एक एक पौधे, उसमें ज्यादा से ज्यादा नीम का पौधा पेड़ लगाया है और जामुन का पेड़ लगाया है और पीपल का है और अर्जुन का ट्रीज है, इसी प्रकार। सो रोड पूरा है। आज भी देखते हैं जो आज के ट्रैफिक भी कितना भी है उसके भी अकोमोडेट करते आ रही है। रोड साइड में दोनों साइड में छाया एरिया, जो ग्रास वगैरह सब कुछ होने के लेस संभव है। फिर दूसरा है जो आई व्यू आपको प्लीजिंग होना तो एटलीस्ट उसके अच्छी तरह का बेटिंग इम्पैक्ट आना चाहिए था। तो इसलिए हम क्या किया, इसके कंप्लीटली ग्राउंड कवर, डस्ट वगैरह ना उड़ने के लिए ग्राउंड कवर, वाडेलिया है, सिंगोनियम है और रिबन ग्रास है और मैडम जो जलपा अगर देख लो ट्रेडस्कैंसिया है ना, जिब्रिना पेंडुला, देखिए लॉन्ग स्ट्रेच है एक पार्क में कंप्लीट है जिब्रिना पेंडुला, उसके साथ अगेव कर दिया। इसी एरिया में अगेव करने के कारण था वो एरिया जंगल के एडजेसेंट, जंगल के साथ था पटरी है। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली दैट एरिया इवन प्रोसोफिस ट्रीज आर मोर। सो प्रोसोफिस ट्रीज का अगर नीचे है, वेल नो नथिंग विल ग्रो। सो एंड एनिमल का प्रॉब्लम भी था, वाइल्ड एनिमल बोर है और बुल है, सो एंड मंकी प्रॉब्लम है। So because of this, all these kind of problem है, shade and wilder animals and monkeys and public vandalism. So whatever we did plantation, that we and frequent road cutting, that is the more important in this urban area, road cutting. Why the road cutting happens? Because frequently they need to lay the utility cables. वहां पर है ना पूरा जो केबल्स है, आप इंटरनेट केबल्स है, टीवी के केबल्स है और एयरटेल है और रिलायंस है और इसी प्रकार अन्य कितना भी आते थे, सारे खुदाई करते रोजाना। सो बहुत डैमेज होता था। तो देखिए इसलिए सेल्फ सस्टेनेबल लैंडस्केप के लिए मैंने छाया एरिया में, शेड एरिया में, यहाँ पर इसी स्लाइड में देखिएगा शांतिपति में फर्स्ट लेफ्ट आप देखिए कॉर्नर में जो जलबहार है, अभी जलबहार का अगर मैंने ट्रिमिंग नहीं किया इसकी वजह से फूल वगैरह आ गया, इसलिए मैंने छोड़ दिया। इसी से ये कंप्लीटली शेड एरिया था। पाली का जो पालियाल्तिया है शांतिपत के जो साइड में पालियाल्तिया लांगिटपोलिया है,
इसमें देखें तो नीचे पूरा खाली था, मिट्टी एरिया था, उसमें कोई दूसरा ग्रास वगैरह वो नहीं पा रही थी। तो इसकी वजह से मैं जलबागर थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर परचेस करके वो एंड प्लस ये दूसरा राइट साइड में जो हाइमोनोकिलिस लिली है वो दोनों में एक 2.5 लाख की परचेस करके लगवाया था। Just I have purchased for only 2.5 lakhs these both plants together. After that, I just took on trial for just a particular 200 meters के लिए 200 meters distance we planted the Hymenocallis lily as well as the Jalbagar, Justicia बोलते हैं। Once we got a good results, after seeing the good results, क्या क्या है हमें इसमें पूरा जलबागर से कटिंग तोड़ के ऐसे पूरा बेड बना के कम से कम 12 किलोमीटर स्ट्रेच, मतलब बोथ साइड ऑफ द सांदी पर 3 बेड, एक बेड 2 मीटर्स का विड्थ का हम कर दिया, कटिंग। इसी तरह का हाइबोनेकलिस लिली भी। तो आज देखते हैं कई करोड़ के काम का है, हमें सिर्फ 2.5 लाख का मटेरियल से हमें कर दिया है। नॉट ओनली सांदी पर, आज हम देखते हैं कहाँ का छाया कोई दूसरा नहीं आता है प्लांट से, वहीं पर हमें पूरा इसी प्रकार जलबागर से पूरा बेडिंग इफेक्ट लेकर है। जो आप कितना हाइट में रखना चाहते हैं उतना हाइट यू कैन जस्ट प्रोन इट एंड ट्रिम इट एंड कीप इट। देखने के लिए ऐसे टेबल टॉप व्यू आ जाता है। तो इसी तरह के जो जंगल एरिया में मैंने क्या किया है, देखिए इसी स्लाइड में आपको स्ट्रेच लाइन दिखता है। So after that, after seeing this, everybody started this kind of the plantation in the shade area, and see the lilies also is a good performance. And even during the rainy season, if you see the Hymenocallis lily, the entire stretch with the bloom head. So is a, to see that blooming in the long stretch, it gives a fantastic feeling. And you see here this bed. So all this Dracena, all Vadelia, all those things are introduced. In the jungle side, whatever we effort we put, but that doesn't grow properly because the animal vandalism, the damages. So once we planted this kind of Karonda, Carissa, now I'm from airport to agar Kannada place, those who are traveling, they can able to see the Sardar Patel mark, how it's now is brought up in a good way, in a successful way, because I used the Karonda. Now the Karonda giving the good tabletop view, superb. And the new tinge ऐसे purple color में, ऐसे red color में आती है. So देखने के it is so nice and it's a very tani and it's कितना भी pruning करें आ जाता है. इसके अलावा that is a shade landscape transformation. सारे रोड में फ्रंट में हमें इतना ये कर दिया है. So अभी पार्क में वॉकिंग ट्रैक एपीडीएम वगैरह किया था. So ये वॉकिंग ट्रैक के साथ भी हमें पूरा completely इसी तरह के plantations we did in a large scale. By only departmentally, no any other contractor, and because luckily our department has a good team and my team is very so nice. So because of their performance, dedications under my leadership, now I'm getting the more and more results, and because of that good results I'm getting today, everyone appreciation. See here, previously what happened? Previously, whatever that the winter seasons comes, they're used to show the previous year seeds, and from the previous year seeds they develop the nursery and thereafter transplant it, and they do planting like Desi Salvia, Desi Petunia, and Desi Antrinum, and whatever that the dahlias, and this kind of pansy and phlox, all those things. But once I took over, as a deputy director, I tried to, because once the power came to me, then I started to make a good display and blooming in the Indian area. So because the people mindset is previously what happened, they don't want to switch over, because if it is anything fail, they may blame and they may get instantly, because from the VIP they will
criticize. So, but what I decided that time, because you, while making the flower bed, one is height, one is low height, and one is a different height अगर यूज करते हैं, उसी में क्या होता है, एक ब्लूमिंग का हेड एक यूनिफॉर्मली एक सिंगल व्यू में हमको दिखता नहीं, बिकॉज एक डेलिया बीच में लगा दिया, बड़ा हो जाता हाइट है, उसके नीचे स्वीट विलियम लगा दिया, उसके नीचे डार्क कलर पैन, जब वो डेलिया भी डार्क कलर है, तो डबल डेलिया, उसमें क्या पत्ता ज्यादा दिखता है, तो पत्ता ज्यादा दिखता, फूल कहीं कहीं दिखता है, फिर उसके बाद डिफरेंशियल हाइट में स्वीट स्वीट विलियम है, तो ये वगैरह कॉम्बिनेशन सही नहीं, कलर कॉम्बिनेशन भी सही नहीं है, हाइट वाइज अरेंजमेंट भी सही नहीं है, बिकॉज सिलेक्शन इज नॉट अप टू द मार्क है। सो मैंने फिर उसके बाद मैंने बिल्कुल चेंज करने के लिए कोशिश किया, इसी तरह का करें, दूर से भी देखें, लंबी इम्पैक्ट आना चाहिए, एक सिंगल व्यू में मेरे को जस्ट लाइक कारपेट पिछा हुआ ना घर पे, इसी प्रकार दिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो यही मैंने लेकर आया, पेटूनिया, आई यूज द पेटूनिया एंड पैंजी एंड ड्वार्फ साल्विया एंड वर्बिनास एंड दिस काइंड ऑफ द फ्लावर्स मैंने यूज किया था। उसके बाद तो मेरे को एक अच्छा इम्पैक्ट आया, पीपल इवन तलकटोरा गार्डन में मैं शुरुआत किया था जो पेटूनिया कॉर्पोरेट व्यू में लेकर आने के लिए लंबी स्ट्रेच है, बट वहीं पर ऑफिसर ने बोला सर देखो ये रिस्क है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पेटूनिया के पसंद करते हैं, इसी तरह के नया वगैरह इंट्रोड्यूस करना कोई चाहता नहीं है। मैंने बोला जो क्रिटिसिज्म अगर आ गया मेरा नाम ले लो, अगर अच्छा आप हो गया तो आप ले लो, ठीक है। सो उसके बाद उसका कन्विंस करने के लिए मेरे को बहुत समय हो गया, बिकॉज नीचे वाले के कन्विंस करना है ना बहुत बिकॉज डिफिकल्ट था। फिर मैंने बोला जो व्हाट एवर आई से यू जस्ट फॉलो इट एंड यू विल फाइंड द सक्सेस। उसके बाद I just introduced the petunia in a different color, in a long stretch, not a small stretch, long stretch. Then only it will give the fantastic and spectacular view. Just like, we are laid the carpet in a very long distance so that will give the eye-pleasing view. Anybody comes from, anywhere and they can single view में they can enjoy the entire color and the entire blue. So इसी एंगल में मैंने काम किया था, उसके सक्सेस बहुत अच्छा था, तारीफ बहुत मिला था, मीडिया लोग, मीडिया फ्रेंड्स, सोशल मीडिया सारे लोग इसके फोटो खींच के उसके एक अच्छी तरह के मीडिया ने अप्रिशिएट किया। वो देखिए आपके सामने सारे हैं, ये एम्स है जो पहले स्लाइड में देखा था ना, उसमें पूरा एम्स के जो एक गोल चक्र एम्स हॉस्पिटल के सामने ये डिजाइनिंग वगैरह किया था, देखो मार्किंग। इसी प्रकार एक देहात से अगर काम करना चाहते हैं ना, अच्छा काम करना चाहते हैं, तो आपको डेडिकेशन इज इम्पोर्टेंट, आपको प्रेजेंस इज इम्पोर्टेंट, आपको जो नॉलेज नीचे वाला के पेनिट्रेशन करना दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिकॉज आजकल तो क्या हो रहा है, जस्ट हाँ ऐसे ऐसा अच्छा करो ऐसे कह के नीचे वाले के छोड़ देते हैं। तो नीचे वाले के छोड़ देते हैं, नीचे वाला के ये जानते हैं, रेक्टेंगुलर जानते हैं, गोल सर्कल जानते हैं, या स्क्वायर शेप जानते हैं, या ट्रायंगुलर जानते हैं। इसी प्रकार बिकॉज उनका कमी नहीं है, इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द लेबर, बिकॉज इट इज वी हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द लैंडस्केप व्हाट इज द एग्जिस्टिंग लोकेशन, whether it is a open or vast area or vista area, then we have to choose accordingly that how to bring the bedding effect. Because agar if you put in just give the responsibility to layman or niche wala, then उसके आप इम्पैक्ट इतना अच्छा आप देख नहीं सकता, लेकर आ नहीं सकता। देखिए आपको आइस प्लांट है, मेसम्ब्रा दिवम का इम्पैक्ट देख लो, उसके पीछे देख लो कितना बढ़िया एक इसके हमें डिमॉर्फोथी का ऑरेंज जो येलो कलर है। इसी प्रकार इस साइड देखिए पेटूनिया के भी रेड कलर के कितना बढ़िया है। तो इवन ओवरऑल व्यू में, बर्ड आई व्यू में कोई भी देखते हैं बिल्डिंग के ऊपर, ऐसा लगता है वहां पर अच्छा सुपर फ्लावर वेली। In the city, people like such a flower display. इसके काम ये जो सिटी अर्बन हॉर्टिकल्चर जो नर्सरी मैन है, आप लोग सबको ज्वाइन करके इसी प्रकार एक सिटी की व्यू कर सकता है।
तो उसी के लिए आपको काम जरूरी है. नेक्स्ट प्लीज. Prachi ji, just move on. Yes. ये एरिया शांतिपत, ये शांतिपत है चाणक्यपुरी में. यहाँ पर सारे एम्बेसी होती है, जो every embassy is there, presence there, and you can find how we are using the mechanization for the field operation and ploughing and the manpower also. See the flower, you can see this yellow color in subsequent slides. We have utilized this coreopsis. It's a perpetual nature. Once 1 year if you plant it, and that will give the bloom every year. Every year, the simultaneously the particular season अगस्त से शुरुआत होती है, फिर जून तक ऐसे लगातार ऐसे इसके आ जाता है. तो आपको अगर सस्ता में काम करना है, फ्लावर देखना है आपको एरिया में, कोरियोप्सिस यूज करिएगा एक बार. फिर उसके बाद आप देसी पेटूनिया, इफ यू यूज द देसी petunia seeds also once, that will perpetually every year, like coreopsis, like linum. So linum का red color है, coreopsis का yellow color है. So this kind of, and petunia के just desi petunia का white and pink color. So petunia is the one of the topmost annuals. Without any cost, without any efforts, you can grow in a very superb way. Even coreopsis also. Please, you see this on the previously how, now we have, it's a differences. The yellow color flowers all are the coreopsis, and we used the dwarf salvia to bring the red color. And उसके बाद ये marigold 2-3 साल के पहले लगाया था marigold. See the marigold color and this red color, how it's look like. Next slide. Move it please. Yes. You see here, we used to change the pattern every year because here it's a red color and yellow color. The right side, first top right में, you see coreopsis का yellow color देखिएगा. Just you see the yellow color of the coreopsis, how the uniformly, the just like a uniform bloom overhead में, lining effect. That is the desirable. While you're choosing these annuals, that should be सिंक्रोनाइज होना चाहिए. फ्लावर में सीजन में सिंक्रोनाइज होना चाहिए. सेकेंडली इसकी ओवरहेड में कंप्लीटली नंबर ऑफ बर्ड्स आल्सो मोर होना चाहिए. हाइट भी सिमिलर होना चाहिए. सो दैट देखने के अच्छा सिंक्रोनाइजेशन, अच्छा कॉन्ट्रास्ट कलर अगर मिलता तो फिर लॉन्जिविटी स्पैन आल्सो. दिखा ये के पहले फूल आ जाता फिर जल्दी खत्म हो जाता, दूसरी पीछे वाला फिर बाद में आ जाता फिर चलता रहेगा, तो फ्रंट वाला फिर ऐसे सूख जाता है. सो इसी प्रकार नहीं होना चाहिए. सिलेक्शन ऑफ सीडलिंग, सिलेक्शन ऑफ वेराइटी, दिस वेरी इंपॉर्टेंट. हाइट देखना है, सिंक्रोनाइजेशन देखना है, ब्लूमिंग टाइमिंग फ्रॉम आफ्टर दैट स्पैन, नंबर ऑफ डेज इज इसके ब्लूमिंग स्पैन चलता है. देखिए इसमें पेटूनिया पहले इसी तरह का नहीं है. देखो इसमें हमें जो किनारे पे आप देख सकते हैं पेटूनिया है देसी व्हाइट का. अंदर देखिए बेडिंग इफेक्ट कैसे डिजाइन बनाकर हमें बड़ा गोल चक्कर है इसमें जो शांतिपत में कौटिल्य मार्ग में. तो कितना बढ़िया लोग सेल्फी खींचते हैं, बहुत अच्छा इसके अप्रिशिएट करते हैं. सो फोकल पॉइंट में, पब्लिक पॉइंट में इसी तरह के हमें कलर लेकर आना पड़ेगा. सो बिकॉज द वेदर कंडीशन इज द वन ऑफ द इफ यू वांट अ सक्सेस, द वेदर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. Fortunately Delhi fortunate भी कह सकते हैं, unfortunate भी कह सकते हैं, but for us winter is a fortunate, for summer is unfortunate. Please go ahead. This slides Talkatora garden. First trial I started to show this kind of the carpet effect in this garden only. This is a formal garden and this is a contour. And it is a Mughal garden types, and it has the fountain and lighting and water cascading and these beds. You see the preparatory methods, the preparatory ploughing operation. उसके बाद ये था. You see the difference. So this is the what I wanted to show and what I wanted to bring in such a corporate view.
so that the public can stand anywhere, they can view the entire blooming. Or otherwise, what happened once, unless otherwise the people come to near, they cannot view the color and blooming quality. So now the person can stand anywhere in the top or side, can spot it. Next, see how this is, how the way it was brought. The first layer, second layer, third layer. We changed the color also. See, red and white and blue. Thereafter, you see yellow color and red color, and next also the different color. And side mein dekhiye, just purple color. This is the verbena. The verbena, the sweet, fragrant, sweet smell and very profuse flower. चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, लंबी समय चलता रहेगा. Just like you prune it, it will come up again. It will come up again. So verbena also one of the soup of plants, like what I previously said, Coreopsis, Decipetonia, and Linum and verbena. These four, it's a very marvelous, very, very marvelous plant. Without any additional cost, you can go ahead. So see, these are the changes. Next. You see, we have the 52 roundabout. NDMC में 52 roundabout है. हर रोड जंक्शन में ब्रिटिश ने ऐसा लूटियंस ने प्लान किया है. आज भी वहां पर रेड लाइट नहीं है. रेड लाइट के बिना कितना भी आज भी ट्रैफिक है, वीवीपी मूवमेंट है, सब कुछ ऐसे स्मूथली फ्लो चलता है. See, all the roundabouts हमें ऐसे रख दिया because it is one of the focal point public के लिए नजर है. जो भी आते हैं जाते हैं उसी के नजर में गोल चक्कर आती है. तो इसलिए जो ब्लूमिंग का स्टैंडर्ड क्वालिटी गोल चक्कर में अगर लेकर आते तभी पब्लिक की नजर में अच्छा एक ही इम्पैक्ट पड़ेगा. So by deciding that factors, I brought the changes in this selection of varieties, selection of annuals, and जो annuals भी seedlings, F1 hybrid seedlings. Most of them I like to bring these seedlings from Pune, because I found some of the nursery, the high-tech nursery people, they are maintaining the purity. Like I have seen many people, and I don't want to mention that because Pune is the hub for the all the plant trading. You can find the n number of traders as well as the plants. It's a pool, I can say, because new variety, whatever the new variety, you can spot it there. You can find it there. So इसलिए F1 hybrid seedlings मैंने वहीं से मंगवाया है. मेरे को I have to follow the procedure even for getting the approval, file approval, case approval, and then tendering process as well as awarding, then supply. If anywhere I found any struck, if it is delay, then ultimately the entire tension will be to our team only, because the people, they curiously waiting. The people may criticize, the media can criticize, VIP can criticize, but they don't know what is the internal side, what are the procedures they have to follow. Is there any delay or any approval delay or file delay? Nobody knows, but we have to bear it. So for that, we have to very, act very judicious, very expeditiously, and we have to go to finance and go to authorities. Time is a constraint, time bond management karna padega. So that is everywhere, even it is everywhere, this kind of the difficulties people can find. And see the Coreopsis, how this is, because suppose sometimes what happened, मेरे पास अगर कोई approval के time अप्रूवल टाइमली नहीं हुआ, टेंडर टाइमली नहीं हुआ, फिर मैं अवार्ड भी टाइमली नहीं किया, अवार्ड भी नवंबर में हो रहा, तो नवंबर के पास में कॉन्ट्रैक्टर के देता हूं तो वो कहां से फिर सीडलिंग लेकर आएगा? उनके पास ऐसे तो नहीं है रेडीली मिलेगा. रेडीली ऐसे तो बना कर तो रखेगा नहीं, कहीं ना कहीं ऑर्डर प्लेस करे तो 1-2 महीने के पहले तभी तैयार कर सकते हैं. सो इसलिए इफ यू वांट टू गेट गुड क्वालिटी and seedlings,
you have to go in a very advanced planning. At least you should have, planting season के अगर 4 महीने के पहले आप सब कुछ अवार्ड वगैरह देना चाहिए, ताकि so that the people, the contractor, nurseryman can prepare variety wise, purity and color wise, and then they can be able to supply. So ये चीज आपको ध्यान एडवांस प्लानिंग में करना पड़ेगा. तो देखिएगा, आपको अगर पैसा नहीं है, आपको सामने जो फोटो है ना, ये देखिएगा, जो लाइनअप फ्लैग्स कितना यूनिफॉर्म है. हम प्रूनिंग भी किया हाइट मेंटेन करने के लिए, प्रूनिंग किया इनिशियली से, इनिशियल टाइम से हमें, बिकॉज अदरवाइज इट विल गो हाइट मोर. सो वी प्रून भी किया, कंट्रोल किया. सो यूनिफॉर्मली देखिए कितना अच्छा है. ये फ्री में, सारे फ्री में. कोरियाप्सिस आल्सो इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट है. 1 साल कर दिया, फिर अगले साल है ना उसी जगह से जो सीड से गिरता है वो दोबारा सीडलिंग पर्टिकुलर टाइम पे आ जाता है. अगस्त सितंबर नवंबर अक्टूबर में, अगस्त सितंबर में आ जाता है. उसके बाद ट्रांसप्लांट कर, बस इतना है. सो सी हियर इट इज अ जंगल साइट. प्रीवियसली मैंने आई हैव शोन सम स्लाइड्स, Jabrina Petula and Agave, because the adjacent, the right side is the jungle. जैन पार्क है, महावीर जयंती पार्क है. एसपी मार्क में यहाँ पर बंदर इतना है, बहुत है, और अदरवाइज है ना वो बुल भी, सांडू वो भी ज्यादा है. सी द जंगल एरिया में भी हाउ वी क्रिएटेड ए फ्लावर वैली. Flower valley, those who are coming VVIP movement or anybody come from airport, they can able to view the left side. So fantastic, just like a flower valley. We did nothing. We did the seeds का broadcasting किया था. ये पूरा कमल कैक्टस के बीच में है. देखियो येलो कलर लॉन्ग स्ट्रेच में कितना बढ़िया कोरियाप्सिस आ रही है. उसमें कोई करने के कल्चरल ऑपरेशन भी ज्यादा नहीं है. So these are all the changes we brought. Some in the annual structure, you see some gold checker, petunia, majestic, petunia and tree. Petunia में 4-5-6 कलर है. So pansy भी है ना, F1 hybrid में sakata का superb है, double pansy है, and viola is a good single वाला है. So and choosing of the even for hanging baskets है, जो petunia में trailing variety है, वो अगर यूज करते हैं वो एक हैंगिंग नेचर आ जाता है, कंप्लीटली कवर होकर. इवन पेटूनिया देसी आल्सो यू कैन फाइंड कंप्लीटली कवर होकर नीचे तक आ जाता है, जस्ट लाइक वेर्बिना है इसी प्रकार. सो अगर एंट्रीना में भी ट्रेलिंग वेराइटी है. सो अगर आप चाहते हो कंटेनर क्या आपको हो, उसी कंटेनर के अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज द वेराइटी, तभी अच्छा लगता है. बिकॉज कंटेनर ओवल शेप पार्ट है, आप उसी में जाकर अगर है ना 2 फुट हाइट का 3 फुट हाइट का पौधे अगर फूल वाला लगाते हो, नीचे तक नंगा रहता है, फिर उसके बाद तो फूल दिखता है. सो दैट वोंट गिव द गुड व्यू एंड गुड लुक. सो अगर विंडो पार्ट्स है, उसी के ऊपर जस्ट 10 सेंटीमीटर से फूल ऐसे कंप्लीटली भर कर आना चाहिए. यू हैव टू व्हाइल डिसाइडिंग द कंटेनर, यू हैव टू मेक योर सी सम ऑफ द ये कुछ नहीं है. ये देसी अरेंजमेंट है, ये देसी है, जस्ट क्या जुगाड़ है. हमारा पब्लिक प्लेस में हम सोचा था इसी प्रकार टायर में भी, टायर है आपके सामने, इसी टायर के भी हम कैसे बेटर यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक ए कंटेनर. इसी तरह के इसमें पेटूनिया यूज किया, वायोला यूज किया, बहुत इसी तरह के डेकोरेट करके भी डिफरेंट लोकेशन में, रोड का कॉर्नर पे, गोल चक्कर के कॉर्नर पे, या कोई पक्का एरिया वहां पर कोई ग्रीनरी नहीं है, वहां पर लगा दिया ऐसे इसी प्रकार 10-15 ऐसे. सो पक्का एरिया में भी ऐसे लगता है एक जस्ट लाइक ब्लूमिंग आ रही है. इसी तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करना इस अर्बन एरिया में कर सकते हैं. देखिए इसी तरह का हमें फ्रेम इंट्रोड्यूस किया है कैस्केडिंग इफेक्ट आने के लिए. सो इस साल में तो ज्यादा कैस्केडिंग नहीं दिख पा रहे हैं. सो हमें प्लानिंग करें इसमें ट्रेलिंग वेराइटी और अच्छी तरह के ट्रेलिंग वो क्या कंप्लीटली भरा लुक कैस्केडिंग इम्पैक्ट आने के लिए. सी आपको सामने यस हियर विंडो, जो विंडो वाला पार्ट है, इसी में देखिएगा कंप्लीटली फुल भरा हुआ है. तो इसी तरह का यू कमला ऐसे सिलेक्शन ऑफ पार्ट्स आल्सो, कंटेनर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नीचे देखिएगा कंप्लीटली पेटूनिया हाउ इट्स ब्लूमिंग. इवन somebody अगर कमर्शियल में अगर करना चाहते हैं
कमर्शियल में you go for पेटूनिया, because पेटूनिया के लंबी समय तक एक स्पैन है, ब्लूमिंग स्पैन है, एज कंपेयर टू अदर है. अगर सपोज कैलेंडुला जल्दी खत्म हो जाता है, स्टॉक है 10-15 एक महीने में खत्म हो जाता है ब्लूमिंग में, कैलेंडुला भी ऐसे है. So blooming season, no, blooming span, while selecting the blooming span है, that is more important because customer का reach होना ना, कस्टमर घर पे लेकर रखें आपको नर्सरी से, एटलीस्ट तो उनका घर पे भी 1 महीने 2 महीने 3 महीने चलना चाहिए, तभी पसंद करेगा. अगर यहाँ पर सब कुछ बर्ड ब्लूमिंग आ गया, घर लेके जाते हैं वहां से, एक हफ्ते में अगर काली हो गया तो फिर कस्टमर वो एक है ना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. सो इसलिए अगर आप चाहते हैं कमर्शियल में भी करना इसी तरह का है, सो यू हैव टू मेक फॉर इसी तरह का विंडो पॉट्स है, राउंड पॉट, स्मॉल पॉट्स में अगर 10,000 15,000 20,000 पॉट तैयारी करो, सेल करो, डिमांड पड़ेगा आपका सिटी के, आपको ढूंढ कर लोग आएंगे. तो इसी तरह का करेंगे, बिकॉज सेलेक्टेड वैरायटी में आप ध्यान करेंगे ना, सब यू कैन बिकम ए प्रोफेशनल. एंड अगर आप प्रोफेशनल वे में अगर गमला तैयारी करते हैं, obviously the people, the public can come and pick the pots, and even they can put the large order also. So you see here, suns, ये marigold भी कितना superb blooming, good blooming, uniform blooming. मेरे को what I wanted is the overhead blooming should be in the uniform height, in the good size. So that also very important. Selection of variety, species के अलावा variety also very important according to the location and blooming nature, या क्या weeping है या erect है या good quality. Yes, next please. Yes, अभी है सभी नर्सरी है, NDMC के पास 10 नर्सरी है, डिपार्टमेंटल नर्सरी है. लोधी गार्डन ग्लास हाउस नर्सरी है, मदरसा नर्सरी है, सर्कुलर रोड नर्सरी है, मदली मार्क रोड में नर्सरी है, तो और मानसिंह रोड नर्सरी है, और बारापुला नर्सरी है. इसी प्रकार वी हैव 10 नर्सरी है, small नर्सरी also. And yes, I'll speak. We have many nursery, but we have faced a lot of labor crisis also. So every time when we are making the nursery management, there obviously labor is very much important. So their energy, their efficiency should be used for multiplication and preparation of the pots. So previously it was the just open land, and it was made bed by manually with the use of a spade and hand hoe like this. So that every time invites, that every time attract more and more maintenance work. When the grass, weeds come up, and so to avoid that weeding operation as well as the pest and disease infestations, we have started kind of facilitation like these beds, cornerstone beds. So now what happened? My labor, it's only concentrating on placing pots and mixing, preparing media and preparing cutting. So now the work is very productive. Like that, you see here the high-tech nursery, how we are rising, how we are used to rise the F1 hybrid seedlings of different varieties. Thermocol pot, we have purchased the seeds. After purchasing the seeds, we just shown in the media that the media is very porous and very lightweight and low EC, and that media is called the bioengineered media. That bioengineered media is really, we found it's a good for the good germination. So these ourselves here you can see the media preparation mixing machines as well as how the people are preparing the seed beds in the just like the boxes shape. Whatever we are observing, you are seeing viewing these boxes, it's a kind of a thermocol box, and we filled with the bioengineered media. After that, that's performing well. You can just see how the nurseries now, the beds are good, so that our laborers are concentrating only on the work rather than the weeding and the this, making the bed and carry all those things. Yes,
These are in our high-tech nursery. You can see how the germination percentage. We bought all F1 hybrid seeds completely. The renowned company seeds all are. Apart from that, we purchased, we produce some of the cutting seeds, Song of India, just top cutting, and that gives very good rooting and it gives a good complete plants within a very short span of 45 to say 60 days. So some of the philodendron plants also we purchased the tissue culture plants from Pune. That plants kept in the high-tech nursery, and now the value is increased. In such a way also we can produce. Now in our high-tech nursery, self-production, we are making so much of lakhs and lakhs of plants through self-production. Because of that, our maintenance cost is got drastically reduced. Because now we are self-sufficiency and self-reliable, and very few materials only we are going for dependency of the other people. We are hanging baskets. You can see how we are preparing for the competitions. Yes. Yes. Now I'm going to say about the how the mechanization brought in the maintenance in our NDMC area. See here, NDMC area we have about 1500 acres. The generation of the green waste also every day we are crossing about the more than 50 tons green waste only, because grass cutting and pruning materials or clipping and trimming materials, everything. So that is a very big challenge for our health department, and the disposal is a very big challenge for the NDMC. So because the landfill site also very limited in the urban area. So now considering all the limitation and the facts, now all the green waste, it is not going to landfill site, and every garden now become the zero waste garden. So that means we prepare the composting there itself, all the green waste, everything, now we are making as a compost by using the shredder machine, so that we can composting process can be expedited and we can shorten. Otherwise, in the normal compost time, it will take time. See, here the so many machines is previous, yeah. This machine, you see, this machine is the digging machine. The bed preparation के लिए कितना labor होता है, कितना labor जरूरत है. Lot of labor is required for the digging operation, but we reduced that and we saved the labor through using this kind of the machine. इसी तरह का digging machine अगर लेते तो बहुत आपको कामयाब है, बहुत अच्छा है. Yes. Blower machine है, ये पत्ता वगैरह गिर जाता है, because the leaf shed होती है during deciduous seasons. All the parks, because we have plenty of trees in the avenues as well as the park, and shedding the leaf and the collection and the sweeping is a very big task. So to reduce that manual intervention, we engage in such kind of the blower. So now whatever that the पत्ता गिरा पड़ा होता है, इसके blower से ऐसे हवा से एक इकट्ठा कर देते हैं, फिर उसके बाद lifting कर देते हैं. तो इसी तरह का planting machine, digging machine, all those things, and battery operated vacuum machines and ride-on lawn mower, trimming, battery operated, all those things. Because अगर आपको manage करना effectively, if you want to manage your landscape, you should go for machineries. Suppose the landscape is a fractions of area, just like marginal small area है, then at least एक urban में इसी तरह का अगर machinery rental service होती है, that also is good for for maintenance service. आपके पास अगर इसी तरह का machinery है रखे हुए, then online service में आप maintenance service public के लिए देख सकते हैं. because public के लिए lawn छोटी होती है, कुछ backyard lawn होती है, कुछ hedges होती है. तो अगर collectively overall city की greenery के हम देखते हैं, demand ज़्यादा है, लेकिन individually उसी machine के purchase करना, individually if they want to purchase the machine and even individually purchase the machine करना बहुत मुश्किल है.
So इसलिए rental service के इसी प्रकार anybody अगर wanted to keep that, it's a good, so that the public can get the machines very easily, the hedge trimmer, all those things. Yes. See here, our trees are very big tree. The pruning operation is the very must. That is very big challenge for us, because public in the residential area, they want sunlight. In the open area, they want to clear the lights and visibility, so that, and even some of the tree required annual lopping. So we have around more than 2 lakhs, 1.8 lakhs trees, the big trees. Apart from that, 2 lakhs small trees, and उसके अलावा जो सिक्योरिटी बंगला जो मंत्री जी की जो और ब्यूरोक्रेट्स और उसके अंदर भी है, सो उसके अगर प्रूनिंग हमारा काम नहीं है, सिक्योरिटी करते हैं, लेकिन आज भी इसी मशीन के देखते हैं ना, देखने के बाद लोग है जो लॉपर से प्रूनिंग मांगते नहीं, उसी के इवन ट्री प्रूनिंग से अगर हम करते हैं, ट्री प्रूनिंग मशीन फॉर ट्री प्रूनिंग से, जो पीपल दे डोंट लाइक इट बिकॉज दे वांटेड दिस मशीन, because the fastness, accuracy, and the service delivery so super. And after introducing these, SPPM, self-operated, pruning platform machine, now all the corporation, after seeing our performance, most of the corporations, they have purchased this kind of the pruning machines for maintaining the tree. So if anybody in these groups, if any contractor or anybody officers, at least you should think about that the urban your township area, if you want to maintain this kind of pruning machine should be there, so that you can deliver the service in a fantastic way and you make you people happy, your residents happy. That is more important. Chellaiah sir, sorry to interrupt you. We have only 10 minutes to go. Within 10 minutes, we have to finish. How many 9:20 minutes? Only 15? 10 minutes. 10 minutes. Okay, 10 minutes. See, this is a tree surgery. We have the tree ambulance. It is a self-explanatory. जो पेड़ में कहाँ पर है, अगर होल है, कोकला अगर होता है, उसके हमें इसी तरह का देखिए ट्रीटमेंट कर देते हैं. हमारे पास ट्री इंडिया में सबसे पहले हमारा पास ये ट्री एम्बुलेंस है, किसी और के पास भी नहीं है. आज भी इसी ट्री एम्बुलेंस के लिए बहुत डिमांड है. कहीं भी पेड़ की कुछ बीमारी है, स्प्रे करने के प्लांट प्रोटेक्शन टीम चला जाता है. अगर कोकला है उसमें प्लास्टिंग, सी सर्जरी, ट्री सर्जरी कर देते हैं. उसी ट्री सर्जरी की नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, उसमें देखिए इसी तरह का कोकला है. सो उसी की वॉल्यूम का हमें बंद करने के लिए लाइट वेट मटेरियल यूज करते हैं, फोम एंड थर्माकोल, एंड उसके रुकने के लिए कोई जो जाली है यूज करते हैं. तो उसके बाद व्हाइट सीमेंट लगाते हैं ताकि जो उसी एरिया कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है. फर्दर इसमें क्या है, इसमें टर्माइट इन्फेस्टेशन फर्दर इसमें नहीं जाएगा, इसलिए हमारा मुद्दा, और पेस्ट एंड डिसीज उसमें और फर्दर डैमेज नहीं करेगा. दैट इज आवर इम्पैक्ट है. इसलिए हमें जस्ट लाइट वेट मटेरियल यूज करके इसकी ट्रीटमेंट कर देते हैं. आज भी इसकी अच्छा है, बिकॉज यहाँ पर अगर पानी अंदर चला जाता है या कोई सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी एरिया, वीवीआईपी मूवमेंट है, कोई भी अगर इसके अंदर कुछ डाल दिया और बड़ा समस्या हो जाता है. सो बिकॉज रेजिडेंस एरिया पे भी वीवीआईपी लोग रहते हैं. सो दिस काइंड ऑफ द प्रॉब्लम, बट दिस ट्री सर्जरी इज नाउ इज द पीपल, इट्स अट्रैक्टिंग वन ऑफ द important one. Even High Court appreciated, NGT appreciating our efforts, Forest Department also appreciating, and most of the people asking our things. See, we did tree transplantation in Delhi. So tree transplantation हमारा ये 2010 में भी कॉमनवेल्थ गेम के पहले हमें किया था. उसके बाद अभी जो हमारा जो रेजिडेंशियल एरिया एक क्वार्टर्स बनना था, वहां पर भी इसी तरह का ट्री था, जिसके हमें जो कंप्लीटली ट्री ट्रांसप्लांटेशन, कोई पेड़ काटा नहीं, इसके ट्रांसप्लांटिंग किया. बहुत अच्छा सक्सेस रेट है, बहुत बढ़िया सक्सेस रेट है. अगर 80% सक्सेस रेट है, 100 तो नहीं है, बिकॉज एवरी सुपर, बिकॉज पीपल, इसलिए अवेयरनेस होना चाहिए. वहां पर पेड़ अगर कटने के अगर जाते तो उसके एटलीस्ट काटने के बदले इस तरह का ट्री ट्रांसप्लांटेशन में हम जाना चाहिए. पब्लिक का अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, जो पॉसिबिलिटी है उसके करना चाहिए. सारे पेड़ तो ट्री ट्रांसप्लांटेशन में सूटेबल नहीं है, बट कितना हो सकता है उतना कर सकते हैं. नेक्स्ट है, तो वी हैव द स्कूल ऑफ गार्डनिंग. वहां पर ये मुद्दा था, हम स्टार्ट किया था पब्लिक के लिए. NDMC वॉट एवर वी आर डूइंग, दैट हैज टू बी रीच द पब्लिक, the horticulture techniques, although under advanced development, all those things. So इसलिए because of that only we have started school of gardening to train the people, the residents, the students, and even our officers, our gardeners.
so that our gardener, our team will build up with the latest technology and the latest practices. उसी पर्पस के लिए हम काम किया था, स्टार्ट किया था 2011 में. तो आज तक हम कई लोग के कई हजार लोगों के लिए ट्रेनिंग दे चुका हूँ. अभी SDMC में भी कम से कम more than 2,500 people got trained, 100 hours training, 10 days training. उसके अलावा कई NGOs also they brought in for this training in different topics. We have the schedule also. We have the infrastructure, classroom studies, and as well as morning different topic में लेते हैं morning, फिर उसके बाद hands-on training afternoon में लेते हैं. So really thank you so much. And now this is the School of Gardening is for actually it's the first short term. It's for only short term courses for on the specific topic. But for like bonsai, for kitchen gardening something. But only specific, but that will not create the Mali, complete Mali, because now India में हमारा पास 42 lakhs people के लिए employment के लिए opportunity है gardeners के, but कितना institute है train करने के लिए? एक माली एक दिन में नहीं बनेगा, या 2 दिन में नहीं बनेगा, ओवरनाइट में नहीं बनेगा, 2 साल में भी नहीं बनेगा, 5 साल जरूरत, 10 साल जरूरत है एक माली बनने के लिए. If you want to get the Mali, good Mali, trained Mali, skilled Mali, that needs at least 10 years in the continuous regular work. But to manage that one, now we are going to start our urban NDMC, yes, NDMC Institute of Urban Green Management, where we are planning to give only hands-on training on different courses for Mali and horticulture manager and garden supervisor and waste manager, and even florist and kitchen gardening topic, herbal gardening, bonsai, and this kind of, I will show you in the next some of the slides. So अगर आप इंस्टीट्यूशन के अगर होता है जो इंडिया में यूथ लोग के, अनपढ़ लोग के काम नहीं है, नौकरी नहीं है कहते हैं ना, उन लोग के स्मार्टली अगर ट्रेन करते हो सो नौकरी पक्का मिल जाता है, उन लोग के लाइफ में भी एक अच्छा एक प्रोग्रेस हो जाता है. इंडिया में इतना स्कोप है. आपको अगर नर्सरी मैन हो, आप लोग अपने नर्सरी में भी ट्रेनिंग के लिए आप एक इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो. खोल का आपको काम भी ले लो, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग. फिर उसके बाद अपने सिटी के जो भी पार्क वगैरह के जो भी लोग मांगते हैं उनका भी आप देख सकते हैं. हर लोग मांगते हैं अच्छा माली चाहिए, अच्छा माली चाहिए, हमारा अच्छा गार्डनर चाहिए. एवरीबॉडी वांट्स अ गुड ट्रेन्ड पीपल, गुड ट्रेन्ड गार्डनर. So think about that. How can we train the people? So in that aspects, now we are going to make that. Next, you see here, our importance, one of the peculiar, our USP is the flower board. The flower board, how the preparing we are flower board, Republic Day, Independence Day, and our Gandhi Jayanti, or what our yoga days, whatever the festivals, national and international festival things comes, these kind of the boards we prepare and display in the public area. That is our uniqueness, and none of the other corporations are doing, because we have the good team, we have a good trained team from the officer to our gardeners. So because it is a labor intensive, one board बनाने के लिए आपको देखने का तो लगता है ये बोर्ड ऐसे फ्लावर है, कंप्लीटली फ्लावर है, क्या लगता है, लेकिन एक बोर्ड बनने के लिए 25 आदमी हैं, 10 घंटे 12 घंटे काम करना पड़ता है. एक फ्लावर में आप नेल्स पिनिंग करना पड़ेगा. उसके बाद उसके एक टीम तो पिनिंग में पहले नेल्स सेलेक्ट करके फूल सेलेक्ट करके सॉर्टिंग करके उसमें नेल करके रखेंगे. फिर दूसरा टीम उसके निकाल कर डिजाइन में जो पैटर्न कैसा है उसके कलर के अकॉर्डिंगली, टेक्सचर के अकॉर्डिंगली उसमें पिनिंग करते ये पर each and every flower has to be pinned and pressed. So in such a way we used to prepare and see the people's response वगैरह आपको सामने है. So इसी तरह का स्ट्रक्चर भी हम बनाते हैं. So every flower show or anything everything is in house. You see whatever I am showing, no contract at all, no contractor at all. We are depending on our own. यहाँ पर देखिए पटेल चौक के जो वेन्यू के प्रधानमंत्री जी आते हैं, माननीय हमारा जो प्रधानमंत्री एंड माननीय हमारा जो प्रेसिडेंट साहब आते हैं अक्टूबर 31 के, उसी लोकेशन के इतना बढ़िया फ्लावर डेकोरेशन हम करते हैं अपने टीम से. नो कॉन्ट्रैक्टर एट ऑल.
So see NDMC how this is going on in a journey. So that's why people are everybody everywhere, you know, appreciating and media appreciating. Next. So now we have started the tree because NDMC के पास एक tree है, एक resource है, इतना अच्छा greenery है, 65% area है greenery है, उसके trees का हमें document कैसे करें, उसके information कैसे तैयारी करें, हम start किया था उसी angle में. Now we have with the latest technology mobile app. Now we have surveyed and we have sensors, and I can able to see the how many trees are in my area in the dashboard, as well as in the 311 app, public app and website. And anybody, if anybody want to filter, suppose anybody want a particular tree, you can just filter it. Suppose amaltas, wherever amaltas, you can find only amaltas tree layers. कंप्लीटली आ जाएगा. उसमें हमें ट्रीज का गर्त है और ट्रीज का हाइट है, कैनपी एरिया है और उसके इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है, ट्रीज का वैल्यूबल पॉइंट्स वगैरह इनकॉर्पोरेट कर दिया. उसमें होलोनेस हो या कोई ऐसे डिल्टेड हो या इसी प्रकार जो फ्यूचर है हमें ऐड कर दिया ताकि कल के मेरे को कोई ट्री डेंजरस हो या डिल्टेड हो, इसके लिए हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर उसके रिमूव करना चाहिए ताकि पब्लिक की हिंड्रेंस फ्री बनने के लिए या डेंजर फ्री रोड बनने के लिए. यस, these are the vertical garden. Yes, okay, now it's a, you can see the self-explanatory vertical garden. Yes, you can move on next please. पब्लिक एरिया में इतना बड़ा एक वर्टिकल गार्डन दिल्ली में जो बनाया तो हमें NDMC ने पहले बनाया है. So more than initial time पे अभी तो we have more than 5,000 square meter area. Now we have vertical garden in the Connaught Place. It's the center of the Delhi. There we have Palika Parking. पालिका पार्किंग के ऊपर है एक चरखा म्यूजियम बनाया है. उसमें गांधी जी की चरखा जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में गांधी जी ने कहा था विजिट किया था, वहां पर उनका चरखा जो घुमा उसके लेके यहाँ लगा दिया, म्यूजियम बना दिया. उसी एरिया का ब्यूटीफाई हम किया था. देखिएगा एक सरकारी एक गवर्नमेंट टीम है. आप ये उम्मीद कर सकते हैं, मैं ऐसे अपने प्राउड के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे को इतना पता है पूरा देश में इंडिया में कहाँ ऐसे सरकार डिपार्टमेंट इतना अच्छा काम करे कि कौन कर रहा है मैं जानता हूँ. देखिएगा आपको सामने कितना जो वर्टिकल गार्डन का जो हम पिलर में बनाया है, मेट्रो के पिलर में बनाया गया जगह नीचे, वो देखकर PMO एक डिसीजन ले लिया सारे मेट्रो इसी प्रकार जो एरिया पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इसी प्रकार वर्टिकल गार्डन में सारे इंप्लीमेंट करो, इसी तरह का एक डायरेक्शन इश्यू किया. सो दैट इज ऑल आर इट बिकॉज यू नो हम जो काम कर रहे हैं उसी के देश के अगर फायदा है उसी में हम आगे हमेशा रहते हैं. नया पार्क वगैरह डेवलप किया, इसमें भी वर्टिकल गार्डन पीछे वो कंटेनर डिफरेंट कंटेनर था. देखिए तो सम ऑफ द फ्रेम्स है आपको दिखाना चाहता हूँ. इसी तरह के पेटूनिया, बेरपीना, पैंजी और इसी तरह का आप कर सकते हैं. सो इवन फॉर फोकल पॉइंट के लिए, सेल्फी पॉइंट के लिए अभी रिसेंटली हम तैयारी किया था. देखो पब्लिक वहां पर सेल्फी लेने के लिए कितना भीड़ है. So you think about that because happening area is important in your city. See here whatever you see the design, no, the cactus. पहले just round था, पत्थर था, कुछ नहीं था. Just 10 minutes में ये डिजाइन मैंने बनाया था. कैसे बनाया आपको पता? जस्ट मैं I had to the pipe, RH pipe, उसमें ऐसे घुमाया है. 10 मिनट में कॉन्सेप्ट डिजाइन आ गया. उसके बाद क्या कैसे लगाना, प्लेसमेंट कौन सा कैक्टस कहाँ लगाना, ये फिर ऐसे सिलेक्शन हो गया. 10 मिनट में हमें इतना अच्छा एक डिजाइनिंग कॉन्सेप्चुअल कर सकते हैं. अगर इंटरेस्ट होता तो सब कुछ कर सकते हैं ना, आप लोग भी कर सकते हैं डिजाइन. यस, थैंक यू सो मच एंड रियली सचिन जी एंड डॉक्टर YP Singh sir and Tyagi sir and Prachi ji and all the participants, really I thank you so much because you had a very good passions. You have the passions as well as the passion. So thank you so much. Anybody want anything, you can just interact, at least whatever I can tell you. Thank you very much for such a wonderful session. आपने हमें पूरा दिल्ली का NMDC का गार्डन घुमाया, उसका इंफॉर्मेशन दिया, सभी को परिचित किया और सबसे ऊपर जाके सबको प्रेरित किया.
It was a very motivational and inspiring for all of us, and I hope it will be very useful for all the participants. So I request all the participants, those who have any question, they can raise their hand and ask a question to our speaker. Those who have any question, they can raise their hand or directly ask your question to our Chellaiah sir, our speaker. जो आप अगर डिस्कस करते हो आपको फायदा है. Vivek ji, please ask your question. Vivek Shukla is willing to ask his question. Vivek Shukla, please unmute yourself and please ask your question. Mr. Vivek, please ask your question. Please unmute yourself and ask your question. Mr. Vivek. Anyway, sir, it is almost 9:35. We have to wrap up the session at 9:30. Even I have. अगर participant interested हो, one coffee table book, I can request Prachi ji to show the coffee table books. That will be so informative, you know. Yeah. Just 5 minutes to. No issues, sir. No issues. Yeah. Prachi madam? Yes, sir. One second. You can start that 18 to 20 and another 2, just you can skip it so that people can view participants. And keep mic on so that participants, suppose in the main course of due course of time, anybody interested, they can ask the questions also. Yes, sir. Yes. Sir, it was very informative, sir. Thank you. But participants, because the ultimatum is the participants, they must know. Yeah. Very true, sir. Very true, sir. Or otherwise, would I show? She's opening. Yeah. Just one second. Yes, sir. So we have because almost dinner time ho gaya. You are doing a very amazing work, sir. Because your appreciation keeps me. Yeah. That's why, because I cannot stop my, Mr. Ganesh is there. Ganesh is willing to ask his question. Mr. Ganesh, please ask your question. Hello. I would like. Yeah. If we want to get the training there, can we get the training there? Yeah, sure. Our School of Gardening, you can definitely. I want to know more about the vertical garden, sir. Surely. Please elaborate us. Yes. So vertical gardening, we are now preparing for 3-month courses. You can, we will inform you. We just keep in touch with Mr. Sachin Pramankar ji and Prachi ji. So, and even you can collect my number also, so that everyone can anyway suppose information regarding training you can get. See, please move it just gradually. As you move it, Prachi ji. Yes. Yeah, sir. She has shared the screen. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Just run the screen, madam. Yeah. Yes. Okay. And see this flower valley. Thank you very much. This is in your coffee table book, sir, right? Yeah. Yes. So very beautiful, sir. Because why I am showing and trying to, because people must get inspiration and they must ignite it so that they can get more interest and curiosity. हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है सर जी सर हम विवेक शुक्ला बोल रहे हैं
शुक्ला सर। सर हम ये सर चाहते हैं कि जो दुबई का मेडिकल गार्डन है जी, उसको हम लोग कब फेल करने वाले हैं? एक्चुअली दैट इज द ड्रीम ऑफ माइंड। दुबई के जो मिराकल गार्डन में, इंडिया में भी, दिल्ली में कहीं और ऐसे गार्डन बनाए ताकि लोग खुशी हो यस जाएंगे। सर, यस सर, चाहते हैं कि उससे अच्छा बने ताकि Yes, वर्ल्ड yes, में हम yes, लोग का yes, नाम yes, हो। yes, yes, और yes. आप सर ये कर सकते हैं, हमने देख लिया आपका काफी चीजें काफी अच्छा किया, आप कर सकते हैं सर। थैंक यू शुक्ला साहब। हम प्रयास तो है। हम तो जानते थे कि ये सब दिल्ली में नहीं होता, हम पहली बार देख रहे हैं कि ये सभी हो रहा है गवर्नमेंट में भी। जी देखिए, अगर हम तो एक इंटरेस्ट कट फ्लावर देखते थे बस है। यस यस यस। हाँ, बहुत अच्छा सर आपने थैंक यू किया। शुक्ला सर। अब आपसे हम जल्दी मिलेंगे सर। जी आइएगा, दिल्ली दर्शन करा देंगे आपको। सर हम गुड़गांव में इस समय है यहीं जॉब कर रहे अच्छा, हैं। गुड़गांव में, अच्छा, गुड आप गुड। गुड़गांव भी इसी साल आए हैं, अभी 2-3 महीना हुआ। ओके ओके। तो हाँ, आपसे हमारी बातचीत बीच बीच में होती रहती है। जी। तो इतना अच्छा सर हम नहीं जानते थे आप वर्क करते हैं। वाह सर, मजा आ गया सर देख के। सी